So, in our four types of externalities, the first one I want to deal with is there is some sort of positive externality that is generated from the consumption of the good. ये तो हमारा हो जाता है merit goods as we've done in AS levels and in fact in O levels also. Merit goods. What are the merit goods? If you were to define a merit good, the way we defined it is that it benefits those who pays for it, and it benefits the third party. Now, what we've done is those who are paying for it and consuming, ये तो हो गया marginal private benefit. और ये जो थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है ये हो जाता है हमारा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ना ऑब्वियसली क्योंकि हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थर्ड पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन है. Okay, this is a positive externality in consumption. So, in other words, marginal social benefit is equals to जो पे करके कंज्यूम फायदा उठा रहे हैं प्लस जिनको मुफ्त में फायदा उठ रहा है external benefit. So, if I was to give numbers would be like this. Let's say 700 का private benefit है इसका, you're paying $700 to get 700 worth of utility, plus third party को मुफ्त में 300 का benefit हो रहा है, third party, like a more cultured economy or people are not getting sick as a result of some people paying and wearing masks. तो इसकी वजह से the social benefit is 1000. So, merit goods के अंदर we can conclude that the social benefit is actually greater than the private benefit. We can see it through numbers here. 1000 is greater than 700. So, this product has a positive externality. Let me draw the diagram and explain it. This is how the diagram looks like for it. How you're supposed to construct the diagram, because in A2 now the diagrams matter. In AS diagrams ki khair thi. So benefit and cost goes on the y-axis with quantity on the x-axis. पहले मैंने बना लिया मेरा demand curve, which we have already suggested is the same as the private benefit. Demand curve is the private benefit curve. And इस गुड को बनाने के लिए supply curve is the private cost curve. Private benefit और private cost जहाँ पे भी intersect करते हैं, this is where private obviously demand और supply है, तो this is where the market will produce. Market क्यों market की quantity बनाएगी? Why? Because market only cares about कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं. This P represents private. Okay? Those who pay for the construction and those who pay for the consumption. लेकिन what we just saw was कि QM के ऊपर इतना तो private benefit है, but we're ignoring the third party का advantage. जब हम थर्ड पार्टी का एडवांटेज इंक्लूड करते हैं तो वी सी दैट द सोशल बेनिफिट एक्चुअली शिफ्ट्स टू द राइट. द सोशल बेनिफिट बिकम्स ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट. इफ यू कंफ्यूज विद दिस आइडिया, लेट मी शो इट थ्रू द डिमांड कर्व्स. लेट्स से ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एंड इफ आई वाज टू से दिस इज माय D1, व्हाट वुड यू से? You would say that the demand has increased, isn't it? It's going to the right or it's moving upwards. So, in other words,
our social benefit is greater than private benefit. Why? Because there is an externality that is taken into consideration. So now, in this example specifically, what we're going to assume is, ताकि हम एक एक्सटर्नैलिटी को एक वक्त में देखें, सो प्रोडक्शन के साइड से we're assuming that there is no kind of external cost, कोई pollution वगैरह नहीं है, we're ignoring that. Right now we're assuming कि supply curve is the private cost and it is the social cost also. So now what the society is going to do is, society is going to look at the social benefit and the social cost. And turns out, on that note, this is the social welfare quantity. So the government feels that this is the quantity that this is the quantity that should be provided for the welfare of the society. However, the market doesn't feel the same way. Market is closer to the origin as compared to the social welfare. So I can safely say that the social welfare quantity is greater, right? The quantity for the social welfare is greater than the quantity the market is producing. So as a result, this difference from here to here represents that market is failing. Why is it failing? Because there is an under allocation of resources. Market is not putting enough resources in it. At the same time, the consumers are under consuming. There is an under consumption of this good, and producers, there is an under production. That's a market failure right there. The market is not doing enough for the welfare. मार्केट फेलियर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इन द ग्राफ, मार्केट तो प्रोड्यूस कर रही है सोशल बेनिफिट, सॉरी प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट की बेसिस पे. ये वर्टिकल डिस्टेंस ब्लैक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स कितना प्राइवेट बेनिफिट है. लेकिन इसी क्वांटिटी पे अगर सोशल बेनिफिट रीड करो तो सोशल बेनिफिट और ऊपर तक जा रहा है. ये जो सोशल बेनिफिट अगर मैं मैथमेटिकली करूं, अगर मैं सोशल बेनिफिट में से प्राइवेट बेनिफिट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? एक्सटर्नल बेनिफिट. That's exactly what this is representing. This is representing the marginal external benefit. How do I know? Let me show you. यहां तक, let's say 700 तक, बल्कि 700 नहीं, हमारे एग्जाम्पल में 1000 तक ये आ रहा है, और QM के ऊपर यहां तक प्राइवेट बेनिफिट आ रहा है, which was about 700. तो एक्सटर्नैलिटी कितनी हुई? यहां से यहां तक 300 की एक्सटर्नल बेनिफिट है. The market is failing by this area right here. Tomorrow we're going to talk about how we can solve this problem of market failure. So remember one thing, market failure is the vertical distance between the social benefit and the private benefit at the quantity market is producing, not over here. Okay, because यहाँ पे तो मार्केट का फेलियर ही नहीं है, यहाँ पे तो सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट मीट कर रहे हैं. If you want to know market failure, you have to look at QM and the distance. Now, until unless you do practice for it, you will have a difficult time in making these diagrams. So ये तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव कंजम्पशन के अंदर एक्सटर्नैलिटीज, which is our market failure here. This is the market failure. Our second externality, again from the consumption point of view, is the negative consumption externality. This is created in our demerit goods. Demerit goods are those goods which the government feels
is harmful to the society. It could be harmful in the sense that health-wise it might pose threat, or from the social fabric like drugs, prostitution, gambling, that has a degradation effect on the society. So demerit goods, if you were to define it, we would say that it benefit, yani it gives satisfaction to those who pay for it, who pays and consumes. Okay, who pays and consumes. But it is harmful to the third party, people who are unrelated to that transaction. Demerit goods के अंदर we have cigarettes, alcohol, gambling, prostitution, drugs, weapons, ये सब demerit में जाता है. Now, as far as those who are paying and getting some sort of satisfaction from it, ये तो हो गए हमारे marginal private benefit. बट ये जो हमारे थर्ड पार्टी को नेगेटिवली इफेक्ट आ रहा है, ये हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाती है. Negative externality in consumption point of view. This is how it works. First thing you will define like that. अब जरा फॉर्मूला करके देखते हैं. Marginal social benefit will be equals to marginal private benefit plus the marginal external benefit. But क्योंकि external benefit negative है, so let's go over this. Let's say private benefit is 700, बट थर्ड पार्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहे हैं वो है 300 के, तो जो सोशल बेनिफिट असल में बचा वो 400 का है. सो वी कैन कंक्लूड दिस आइडिया दैट फॉर दीज गुड्स द सोशल बेनिफिट इज एक्चुअली लेसर देन द प्राइवेट बेनिफिट. तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी को कम फायदा हो रहा है एज कंपेयर टू मार्केट जितनी क्वांटिटीज बना रहा है. And that's the harmful effect. There is some sort of negativity involved in it. So when we're making the diagram for it, what are you going to do is, again, I would recommend that now you do it yourself, you make it yourself. Don't forget the y-axis, because that's one confusion that you have. Demand supply बना रहे हो तो price and quantity आएगा. डिफरेंट डायग्राम्स के डिफरेंट वाई एक्सिस लेबल्स होते हैं. पहली चीज प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट. मार्केट ने क्वांटिटी बनाई इतनी सारी. वाई प्राइवेट, और प्राइवेट रिप्रेजेंट्स that this is amount of money they're going to make, maybe good profits also. Good idea, let's do this. लेकिन इसका जो सोशल बेनिफिट आ रहा था वो कम आ रहा है. Marginal social benefit is less. So we're still going to, from the production point of view, we're going to ignore that there is any kind of externalities in production. We'll deal with that separately, ceteris paribus, one factor at a time. So on that note, what do we get? इसके social benefit और social cost की basis पे, this is what the social welfare quantity is. And what we can clearly see over here is that our market quantity is greater than the social welfare quantity. So clearly market is producing more. इसका market failure हम कैसे बताएंगे? That there is an over allocation of resources. There is an over consumption of this good. There is an over production of this good, and it's harming
द सोसाइटी ओवरऑल। मार्केट फेलियर कितना है? तो मार्केट फेलियर के लिए हम मार्केट की क्वांटिटी देखेंगे, उस पर हम देखेंगे कि सोशल बेनिफिट तो इतना सारा आ रहा है, 400 के ऊपर आ रहा है। लेट मी डू द मार्किंग, 400 के ऊपर आ रहा है। And I'm linking this to the numbers on the right that we have. QM के ऊपर 400 का सोशल बेनिफिट है, प्राइवेट बेनिफिट ऑल द वे ऊपर 700 तक आ रहा था। तो मार्केट का जो फेलियर हो गया वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, सोशल बेनिफिट माइनस द प्राइवेट बेनिफिट। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव externality in consumption, or the negative MEP basically. Okay, and how to solve this? Well, we need to go back to the social welfare quantity. Somehow, whatever way we can reduce the quantity to QSW through supply or demand reasons, we will be able to solve this problem. तो ये मार्केट फेलियर है। जब तक इनफैक्ट मार्केट फेलियर की अगर मैंने क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो ऊपर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस था ये इस QM के ऊपर था, जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक SW तक नहीं जाते, तो ये छोटा ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द मार्केट फेलियर all the way till SW. In this case over here in demerit goods, this vertical distance represents the market failure at QM. जब तक सोशल वेलफेयर तक नहीं चले जाते, ये पूरा ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट फेलियर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट until you reach the social welfare quantity, and social benefit or social cost will meet and market failure will go away. Now we're going to shift our mindset to the production side, and we're going to talk about some negative production externalities that comes about as a result of production. So whenever we produce, so what happens is you have to bear the cost of production, marginal private cost, जिसमें वेजेस, रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह सब आ जाती है। लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी जब प्रोडक्शन करती है ऑयल की तो उनको जितनी भी ड्रिलिंग, लेबर कॉस्ट और ये सप्लाई की कॉस्ट और ये सब देनी पड़ती है, दैट्स योर प्राइवेट कॉस्ट। बट एवरी नाउ एंड देन देयर इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एज वेल, स्पिलेज, वेस्टेजेस, मरीन लाइफ डैमेजेस। तो अगर मैं इन कंपनीज के ऊपर ये फाइन लगा दूं कि ठीक है आपकी जो ऑयल बनाने की जो कॉस्ट है वो एक्स अमाउंट है, लेकिन उसके ऊपर ये जो आप इन्वायरमेंटल डैमेजेस करते हो इसके रफली हम इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू आप पे और मजीद कॉस्ट डाल रहे हैं, बिकॉज वी नीड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू क्लीन द प्रॉब्लम्स दैट यू आर क्रिएटिंग. In fact, what we're going to do is we're going to put those costs on you. So obviously what's going to happen? Cost of production is going to go up for them. So from the society's point of view, if you take the cost of producing oil plus the third party impacts, the negative externalities, turns out that the social cost will be actually greater than the private cost. Suppose प्रोडक्शन करने के अंदर पर लीटर पर गैलन 700 रुपीज इज बीइंग स्पेंट और 200 इज द इन्वायरमेंटल डैमेजेस दैट यू आर क्रिएटिंग, तो सोसाइटी के ऊपर 900 की कॉस्ट आ रही है तुम और मेरे ऊपर, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी कैन सी हियर इज कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स which are creating these negative externalities. ये हमारी negative externalities हैं, लेकिन not from consumption. It's not happening because of the consumption. It's happening because of the production.
negative externalities in production. सो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फिर सप्लाई कर्व की तरफ अपना फोकस कर देते हैं. तो इफ आई वांट टू टेक माय फोकस ऑन द सप्लाई कर्व, this is how my diagram is going to look for it. Quantity, benefit slash cost. So from the market's point of view, market क्या देख रहा है? Private benefit देख रहा है और private cost देख रहा है. और उस बेसिस पे मार्केट्स ने कहा ये मेरी मार्केट की क्वांटिटी है, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी एंड हाउ मच मनी एम आई गोइंग टू मेक फ्रॉम इट. जबरदस्त हो गया, क्यूएम की क्वांटिटी बन रही है. नाउ विल अस्यूम इस गुड का कोई थर्ड पार्टी इंपैक्ट नहीं है फ्रॉम कंजम्पशन, तो मैं यहाँ सोशल बेनिफिट इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट कर देता हूँ. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि इसका कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है. सिट्रस पैरेबस एक चीज़ को एक वक्त में लेके चलते हैं. इस वक्त इस गुड की वजह से नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है. तो इफ आई वॉज टू डू लेबल्स, माई लेबल्स आर सेइंग राइट नाउ मेरी प्राइवेट कॉस्ट है 700. ओके और क्योंकि 200 की थर्ड पार्टी के ऊपर एक कॉस्ट जा रही है तो सोशल कॉस्ट 900 के ऊपर चली गई है. तो मेरा जो सोशल कॉस्ट है वो ये है, सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट. देखो जब ऑयल कंपनीज को मैं बोलूंगा कि यू हैव टू पे फॉर द डैमेजेस, दे विल एक्सपीरियंस अ राइज इन द कॉस्ट. और हमने ये पढ़ा है ओ लेवल और OAS में कि वेन एवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द सप्लाई फॉल्स डाउन और इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट और अपवर्ड्स, है ना. इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट और अपवर्ड्स. अपवर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के लिए अब 200 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई है. सो यहां से यहां तक सोशल कॉस्ट है, यहां से यहां तक प्राइवेट कॉस्ट है. अगर तुम सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट माइनस कर दो तो एक्सटर्नल कॉस्ट बचती है. तो ये जो मेरा रेड डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, जो इस केस के अंदर हमारा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन है. ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन. इन अनदर वर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट फेलियर. अब ये मार्केट फेलियर खत्म करना है तो सोशल वेलफेयर पे जाना पड़ेगा. सोशल वेलफेयर की क्वांटिटी है जहां पे MSB इज इक्वल्स टू MSC राइट ओवर हियर. सो सोसाइटी के हिसाब से मार्केट फेलियर है ये, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता. नीचे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई है कि मार्केट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और सोशल वेलफेयर क्वांटिटी कम है. सो वी कैन से दैट देयर इज एन ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, देयर इज एन ओवर consumption, and there is an over production. Okay, so this is basically our problem from the production point of view when anything is creating negative effects on the society, and so we need to factor in the costs. Now we're talking about the fourth thing, positive production externality. What's happening here is basically you have to pay a price to produce a good, okay, and social cost के लिए तुमको external cost ऐड करनी पड़ेगी.
हो ये रहा है, इस गुड को बनाने में कॉस्ट जा रही है 700 की, और जो इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट लगी है इनफैक्ट उसने तुम्हारी सोशल कॉस्ट को ही गिरा दिया है। ये क्या सिचुएशन है? बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस सिचुएशन इज दैट द सोशल कॉस्ट हैज एक्चुअली फॉलन डाउन एज कंपेयर टू द प्राइवेट कॉस्ट। ये प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि the factory which was first polluting the environment and it was polluting the waters is now doing something which is, instead of throwing sodium in the air, it is making the air cleaner. You have certain filters or something जिसकी वजह से environment में ज़्यादा अच्छा तुम ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो। दूसरी तरफ पानी के अंदर जो तुम वेस्टेज रिलीज कर रहे हो, that's actually good for the fish and the coral reefs and the nearby land's fertility and all that, if you can come up with certain ways in production like that, जिसको ज़्यादातर यहाँ पे बोलते हैं इको फ्रेंडली वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टेन थिंग्स। तो उसमें सोसाइटी पे जो सोशल कॉस्ट है वो असल में गिर जाएगी। नाउ वी हैवंट परफेक्टेड दिस बट quite a lot of people are actually working on it, कि how can we make the production process more efficient and beneficial for the economies. So इसके ऊपर जब हम diagrams बनाएंगे, so obviously we're thinking from the production point of view, so we have the private benefit, we have the private cost, so the label goes benefit slash cost. This is our supply curve or the private cost. This is our demand curve or the private benefit. This is the quantity market is producing. We'll assume that this is just any kind of good which does not have any kind of externality. So इसमें जो external benefit है वो equals to 0 है. Now, प्रोडक्शन जब हम करते हैं इसकी तो इनफैक्ट सोसाइटी पे इसकी कॉस्ट गिर जाती है, और जब किसी चीज़ की कॉस्ट गिर जाती है तो उसका सप्लाई कर्व भी गिर जाएगा। दिस इज वेयर द मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व इज गोइंग टू फॉल डाउन टू, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट, दिस इज द क्वांटिटी विच द सोसाइटी फील्स should be produced. कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक। So we're actually saying कि इस किस्म के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस वक्त मार्केट इज एक्चुअली अंडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, there is an under consumption of this type of good, and there is an under production of this type of good. It could be something to do with, like for example तुम्हारे जो ये simple straws और forks और knives and plastic plates और ये सब आती हैं, they are creating negative impacts. Why? Because all of these trash is going and they are non biodegradable. अब नई कंपनीज आ जाती हैं and they come up with the wood based, ठीक है, you're cutting down the forest but at the same time you're planting it also, but the good thing about them is you can put them in the ground and they will decompose. Okay, so third party के ऊपर इसका जो environmental effect है वो कम हो जाएगा. But right now what's happening is that those goods are hardly being used or hardly being produced. Okay, so market failure कितना है? Market failure है QM पे देखते हैं, social cost है इतनी सारी, और प्राइवेट कॉस्ट है यहां पर, प्राइवेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट कर रहा है इस गुड के बारे में एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। ठीक हो गया? और इसका मसला कब सॉल्व होगा? जब मार्केट्स इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर देंगी और ये सारा एरिया आहिस्ता आहिस्ता से
कम होते 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 फेलियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो फेलियर विल एग्जिस्ट until and unless you don't reach the SW की quantity, and so this needs to be corrected. We're going to talk about the corrections in the next lecture.